Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.
never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. I'm listening from here, but I'm talking to there, okay? Keep you guys waiting. Really apologize. Yeah? But your show and your walk made all our grudges go away. What grudges do you have? You're only 22. How can you have grudges at 22? No, like he said, like for being late. That's why. Oh, that's it. Okay, that's Really. right. That he should be. He should be apologetic. He talks too much outside there. That's right. Phenomenal show. Oh, thank you so much. Appreciate it. Lots of energy. Yeah. Satisfied with the show? You're always looking for the next one to do. Always looking for the next one to do. When it's done, it's behind. I'm thinking, how can I make a better one the next time? And you had a lot of fun probably walking there. बहुत मजा आया जी. It's a very unique experience because whenever you see fashion shows, there are models walking straight up. You know, the clothes are obviously in focus, but then their personalities don't really come out. But here, it was a different show. It was more about having fun. It's about bringing the disco feel back. It was about the music. It's about how you feel the music, you feel the outfit, and it's about your own personality coming out. So it was beautiful. इनका भी नया look दिख रहा है. देखिए ये भारत में पहली बार भारत में पहली बार बाल लगातार नो इट्स नॉट बाल लगातार. इनके लिए जो आपने इनको पहनाया, वो क्या दिमाग में रख के सोचा?
ये था कि ये ज़रा सेहत से तंदुरुस्त है, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो वी नीडेड क्लोथ्स दैट वुड बी लिटिल मोर मॉडर्न, मोर फन, बट मोर एथलेटिक, सो इनके लिए फंकी वर्ड यूज करो ना सर, एथलीजर वाला जो वर्ड है ना बड़ा अच्छा है, सुनने में बड़ा मजा है। So we made something that is athleisure. Athleisure is mixing sports with formal and dressing it down, being more trendy, which is the biggest fashion trend today and for the next 5 years. Everybody should have athleisure. सर रिसेंटली खाली एक रणवीर सिंह जो एक्टर है जो फैशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फैशन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या लोगों को एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। वो तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज आई थिंक सेफ इज़ बोरिंग, यू नीड टू गेट आउट देयर, यू नीड टू रिकग्नाइज हर किसी के स्वभाव में ना डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है, जैसे 9 डिफरेंट इमोशंस होते हैं, स्वभाव में भी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं। हाउ डू यू रिकग्नाइज दैट? ओनली इफ यू गिव देम अ चांस। सो फैशन इज अगेन समथिंग लाइक दैट, it's how you feel, that's how you should dress. Not every, like you, lot of time it's like, black is not the only color. It's important to wear prints, it's important to wear different colors so that you walk into a room. Why does, when Ranveer Singh walks into a room, why does everybody feel so happy? It's because not just what he wears, he also wears a great attitude. See, and I just want to add to that, and the thing is also that while people are doing that, there are so many thousands and thousands of actors around. How do you stand out? How do you stand out differently from it? If you don't portray your character in a strong way, it's damn difficult to stand out. यार मुझे मजा बड़ा आ रहा है. I'm loving the answers you're giving in this look. मुझे मजा बड़ा आ रहा है. So, how do you stand out? Look, बराबर देखो. Outstanding है. जी, संदीप सिंह की सूरमा कर रहा हूँ मैं. आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली उसकी 25 मई की रिलीज होगी. 2 भाइयों की कहानी है. इट्स अ ग्रेट इमोशनल स्टोरी ऑफ अ फैमिली. हॉकी ज़रूर है, इट्स बेसिकली स्लाइटली ऑन द बैकड्रॉप, बट वो है. एंड देन आई मूव इनटू इनसाइड एज 2. तो उसका सेकंड सीजन भी शुरू होएगा एक्सेल के साथ. काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आप, मतलब अपने अभिनय के अबे भाई 2 सुपर हिट है, और क्यों नहीं बने? सर आत्मविश्वास ही एक चीज़ है. अगर मैं अपने में नहीं रखूँगा ना, तो दूसरे लोग भी नहीं रखेंगे मेरे में. सो आई फील मेरी एक अपब्रिंगिंग रही है स्पोर्ट्स के थ्रू. ये मेरे पिताजी ने ही सिखाई थी मुझे बात की, जहाँ आप जाएँ कमरे को खुशियों से भर के आए. तो हमारी यही कोशिश है. आज आपने पूरे माहौल पूरे बॉल रूम में अबे एक बात मैं कमरे को खुशियाँ से भर के आए, कमर को नहीं. कमर को नहीं भरे खुशियों से. The lady wants to ask. Oh yeah, please. So what's the brand new funk that you're promoting? Athleisure. Brand new funk is athleisure. This is about living disco life in 2020. डिस्को दीवाने. Aha. Why don't you do a step? या कम ऑन शो स्टेप ना. या ना थोड़ा मजा नहीं आ रहा. बस हाँ. क्या म्यूजिक क्या? म्यूजिक पर. ओए. गिव दैट स्टेप. या नो बट अरे हाँ जी बोलिए. डैडी को बताया आपने कि आप बायोपिक कर रहे हैं, उनके बारे में उनको पता है? जी, उनको हर चीज़ पता है जी. मैं जो भी खुराफात करता हूँ सब चीज़ें मेरे पिताजी को पता होती है. इम्पोर्टेंट है. कल को कहीं फंस गए तो बापू ही बचाएगा ना. आपके पिताजी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था अभी शायद दिल्ली में, जहाँ जी, पे टाइगर पटौडी साहब के लिए. जी, हम लोग वहाँ पे मुंबई में नहीं, थोड़ा आप हमें उसके बारे में थोड़ा संक्षेप. देखिए, वी हैव लॉन्च्ड एन अकेडमी. इट्स कॉल्ड द मंसूर अली खान पटौडी अकेडमी, जो शर्मिला जी ने खुद आकर उसका उद्घाटन किया था. दिल्ली में हुआ था फंक्शन. सोहा भी आई थी, सभा आई थी. मिस्टर बच्चन ने वो आ नहीं पाए क्योंकि हमारे तरफ से डेट चेंज हुई थी, लेकिन मिस्टर बच्चन ने एक बहुत ही बढ़िया 6 मिनट का ही गेव अ रियली नाइस टॉक विच वॉज रिकॉर्डेड एंड प्लेड. आमिर भाई आए थे. ही टुक आउट टाइम फ्रॉम थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड ही केम स्पेशली. और बहुत सारे क्रिकेटर्स भी आए थे. 83 के कपिल देव साहब आए थे, मदन लाल जी आए थे. देयर वाज विश्वनाथ फ्रॉम विश्वनाथ. Yeah, he was there. Oh my God. He was there. Mohinder Amarnath Square Saab cut. आए थे. Yeah, and obviously the young Lord Yuvraj Singh was there also. Virender Sehwag was there. So it was a great initiative to bring about. Sohail Bhai came from here. So it was we wanted under one. Neha Dhupia was there. We wanted under one roof. We wanted a mixture of entertainment and cricket, especially the purists, because it's important. Because we try to bring about.
it's like how fashion, we go back in time, we bring about new things, and then we go back and bring about old things. So here it is the same thing in cricket, because purity is something which is missing. You know, we're trying to work on that, and we're trying to get back to ये sport. आपने प्योरिटी वाली बात बहुत अच्छी बात की। इस पे मैं प्रश्न, मेरा तीसरा प्रश्न होगा। उससे पहले एक चीज़, आपके पिताश्री लेजेंड है हमारे, मतलब शायद स्पिन का मतलब अगर जो हो, उनका नाम लेके अभी भी लोग अपनी शुरुआत करते हैं। आप एक सूरमा कर रहे हैं, उनके जीवन पे कोई आधारित फिल्म बनने का कहीं भी विचार आपने लिया? देखिए, वो एक ऐसी शख्सियत है मेरे पिताजी, जो उन पर कितना भी लिखा जाए वो कम है, यू नो, बिकॉज ही इज लेड हिज लाइफ वेरी ओपनली, वेरी फियरलेसली. So whether he was a player, whether he played for Delhi, Punjab or India, he captained India for 4.5 years, whether he was not just a captain but also after he retired he became an administrator. So keeping all of these things in mind, and then obviously his personal life, it's a great story to tell, but it's also important that the person who makes it, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि पास्ट की लाइफ जो क्रिकेटर्स की रही है वो कैसी थी. दे वर जेंटलमैन. Cricket was a gentleman's sport. Unfortunately, not anymore. Not with the Mr. Steve. Well, मैं उसी पे आने वाला था, आपने खुद ही ने अच्छा स्टीव के बारे में बोल रहे थे. So it's always been known as a gentleman's sport. अब देखिए थोड़ा aggression आ चुका है. Everybody likes to express themselves, whether it's anger or happiness or whatever it is. But पहले एक हर किसी में एक अदाएँ थी, एक स्टाइल था. So I just feel that वो दौर को वापस अगर हम लाएंगे तो आगे की जो जनरेशन नेक्स्ट है वो भी वो ही चीज़ों को देखकर सीखे और आगे बढ़े. यू नो, बिकॉज हमारे पास अगर एग्जांपल्स क्रिकेट में देने के लिए अगली पीढ़ी को क्या है, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं. You know, we need to have more such examples. No, and I wanted to add that, you know, when cricket was played, जब पहले cricket लोग खेलते, they used to play it because they loved the game. Yeah, they loved the game. Beautiful. आज तो it's for the love of competition. किसी भी हालत में जीतना है ऐसे लोग जीते हैं. More than the game, it is competition. This is how the world has changed, but there's a little difference between it. Okay, Angad, Yeah, one more question. Yeah. Angad, इनको वेट भी तो कराया ना हमने. अच्छा, अंगद, मैं मैं ये निकलूँ बोला ना था कि वो किस अभिनेता, आप हो ना यहाँ? मैं भी हूँ. अंगद, वो किस अभिनेता, कौन अभिनेता होगा जिसको जो ऐसा आपके पिताजी के किरदार को अच्छी तरह से निभा पाएंगे? परिपूरित कर पाएगा? सर, ये तो बहुत ही कठिन सवाल आपने पूछ लिया है. इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दैट और टू थ्रो नेम्स, बिकॉज मुझे लेफ्ट हैंडर ही देखो ऐसे बन करते हैं. So I really feel, because it's not justified that I say something right now, because whoever comes on board to make it or write it or however it's going to be, पहले तो my father has to give his consent कि चलो बनाओ. पहले वहाँ से तो एक consent आए, उसके बाद ये अलग दूसरी बात है. अब now we come out to gentleman's game. आपको ये पूरे एपिसोड के ऊपर क्या प्रतिक्रिया लगती है, जो the way the things happened just now with the cricket, probably Australia, which is supposed to be the... देखिए, I really feel what has happened is not been correct, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक अपने देश के कप्तान होते हैं तो everybody looks up to you. एंड हमारे ही देश में नहीं, बट जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है अलग अलग देशों में, क्रिकेटर्स लुक्ड अप टू, दे आर वर्शिप्ड. एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे बिकम वेरी फाइन एम्बेसडर्स ऑफ द गेम. दे शुड सेट एन एग्जाम्पल. जी, ये घटना घटी है, इट्स अ बिट सैड, but he's a phenomenal player. Steve Smith has been. He's young. He's got a great future ahead. ये जो बैन लगा है, वो obviously the Cricket Australia has thought about it. They have something in mind. It's totally their decision. But I would say that it was important to set an example. Because sports should not be taken lightly. Because kids watch it. बच्चे आते हैं, खेलते हैं. गुर्बत से भी कोई बच्चा आता है, गरीबी से आता है, उसके पास किट नहीं होती, वो कहीं से मांग के बैट लाएगा, जूते लाएगा. उनके ड्रीम्स हैं, उन सपनों को हमें, वी आर वेरी मॉरली रिस्पॉन्सिबल एज स्पोर्ट्स पीपल टू टेक देयर ड्रीम्स फॉरवर्ड. वेरी वेल सेड. थैंक यू. हाउ इज युवराज? काफी दिनों से दिख नहीं रहे हमें. अब तो आईपीएल में देखेंगे. खुश हैं? ओके, थैंक यू सो मच.